Hello friends, today I am with a new video that is related to video conference which is newly launched for Airtel Bluejeans video conferencing. As you can see the icon, right? So I have installed it and I will click on open. As you will install it at that time it will ask you many of the things. आपको बहुत सारी चीज़ें वो पूछेगा like your name, name, your surname and then your login password एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू डू द वेरिफिकेशन. तो वो वेरिफिकेशन के लिए आपके ईमेल में आपको जाना है एंड देन यू हैव टू वेरीफाइड. जब आप वेरीफाई कर लोगे तो वो इट विल ऑल्सो आस्क दैट हाउ मेनी पीपल आर देयर, कंपनी साइज और वो सब. फिर लेट्स गो जैसा आपको एक ट्रायल वर्जन के लिए दिखेगा. मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है. सो लेट अस स्टार्ट. यू कैन सी दिस टाइप ऑफ थिंग विल कम ओवर हियर. तो आपको पूछेगा वो कि सिलेक्ट द कैलेंडर. आई विल नॉट सिलेक्ट नाउ, आफ्टरवर्ड्स वी कैन डू इट. लाइक गूगल कैलेंडर से आप मीटिंग शेड्यूल करना है. इफ़ यू वांट टू शेड्यूल इट देन यू कैन गो विथ इट, बट आई विल गो डू इट लेटर. ओके, you can select a calendar. Okay, now schedule a meeting. Yes, if you want to schedule it, right? फिर यहाँ प्लस साइन आपको दिख रही है. मीट नाउ, शेड्यूल एंड ज्वाइन विथ आईडी. हाँ, मुझे ज्वाइन विथ आईडी आई वांट टू डू, सो आई विल गो विथ द आईडी एंड पासवर्ड. राइट, इफ़ आई एम ज्वाइनिंग विथ एनी वन, राइट, इफ़ आई एम ज्वाइनिंग विथ एनी वन, किसी ने पहले से दिया हुआ है उसका आईडी और पासवर्ड मुझे ज्वाइन करना है. एंड मीट नाउ, सो योर माइक्रोफोन इज़ ऑन, वीडियो इज़ ऑन. रिमेंबर फॉर ऑल द मीटिंग इज़ ऑफ ज्वाइन द मीटिंग. आपका आईडी आपको दिख रहा है, यू कैन सी इट and now I can join it. It is connecting. There is an error. Okay, we will do the scheduling. So like computer and the timing I am giving now only starts. You can see it is giving the timing of 1 hour, right? तो वो 1 hour का टाइमिंग दे रहा है हमें. So like I am going with 40. Okay, then as we have done the meeting schedule, you can see the start and end is given. Save it, repeat it, never, we don't want to repeat it, that same thing. Okay, attendees we don't have it. Allow, yes, allow the contacts if you want to invite anyone. Okay, and then click on save. As you will click on save, you can start the meeting. Here it is given select to join app, audio and video or dial in audio. I want to go by the app. Okay, so let us start. As you will start, you will see that this type of screen will come. Okay, so now the shared information you can see in the meeting ID. Okay, meeting ID, and with that the link of it, you can share it by copying the URL. Then we have the options like share screen, audio device, start recording, people view and invite, and lock meeting. Share screen, you can share the screen with people. Audio, so audio, yes, whatever you have connected. Start the recording, you can do the recording. You can see the people view. In that people view, speaker view and gallery view. In that speaker view means the speaker while he is speaking. As I have not any participants now, मेरे पास कोई पार्टिसिपेंट्स अभी नहीं है, तो आई विल नॉट बी शोइंग यू द लेआउट. ओके, वी कैन ऑल्सो इन्वाइट पीपल. देन नेक्स्ट we can see over there that gallery view is also not वो अभी unable है because participants, as I have told you, if we are having participants then it will be done. Lock meeting, if you want to lock it while when everyone has joined और उसके बाद किसी को join नहीं करना है, then you can lock the meeting.
Okay, you will come back over here. Then we have the end the meeting. You can see in that leave the meeting, यानी आपको छोड़ के जाना है. Then you can go and in 15 minutes यानी 15 मिनट में आपको end करना है. And the meeting for everyone यानी सारे लोग उसमें से निकल जाएंगे. You want to end the lecture. Okay, so you will go with end meeting for everyone, and you can click on cancel also and come back to the meeting. Hope you all have understand. Please like and subscribe my channel.